Hello everyone, this question appears in class 8th NCERT chapter of rational number. This is ninth question of its exercise 1.1. So the question says that is 0.3 the multiplicative inverse of 3 is to 1 by 3? Why or why not? So 0.3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे, so 10 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 3 is to 1 by 3 को हम लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 3 9 प्लस 1 10 by 3. सो हमें चेक करना है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं. सो चेक करने के लिए हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1. सो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. 3 इंटू 10 by 3. सो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3, सो हो जाएगा 1. सो इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, मीन्स ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. सो हैंस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 is to 1 by 3. Thank you.